Hello student, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you if statement of Python. So watch it carefully. Student, I explain it in the form of question answer and हर एक क्वेश्चन आंसर पे मैंने एक एग्जांपल दिया है विच इज़ वेरी ईजीएस्ट एग्जांपल जो आपको हेल्प करेगा पाइथन के इफ़ स्टेटमेंट को समझने के लिए. ओके, लेट स्टार्ट द क्लास. Question number 1. Explain if statements of Python with an example. If statements of Python is used to execute a statement based on condition. If test the condition and if the condition is true, it performs certain action. We can also provide action for false situation. Means your program totally depend on condition. If the given condition is true, then perform certain action, and the condition is false, then other statement will be executed. On the basis of this, if statement in Python are many of form. First, if without false statement. Second, if with else statement. Third, if with elif. Fourth, nested if statement. So let's discuss it one by one. First, if statement, and we can also say that simple if. Student, in the simplest form, if statement in Python, check the condition and execute the statements if the condition is true, and do nothing if the condition is false. मीन्स जो आपका if स्टेटमेंट है ये सिर्फ कंडीशन के ट्रू होने पर ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट देगा. if statement do nothing if the condition is false. ओके स्टूडेंट, मीन्स फॉल्स होने पर कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो आपके सामने कोई भी रिजल्ट जनरेट नहीं होगा. The syntax of if statement. Student, syntax means the way of you write a program into the computer system. Okay. Now, if is the keyword. After that, condition means जो भी कंडीशन आपको चेक करनी हो आप किसके साइड में लिखेंगे इफ स्टेटमेंट. आफ्टर दैट आप कॉलन यूज करेंगे. उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 मीन्स मल्टीपल स्टेटमेंट यू हैव टू राइट हियर. स्टूडेंट, remember the following point. It must contain valid condition which evaluates to either true or false. Okay. Now second, condition must followed by colon. It is mandatory means ये compulsory है. colon आपको लगाना ही होगा after the condition. Statement inside if must be at same indentation level. Okay student, now ये 3 points आपको हमेशा याद रखने हैं when you use if condition. After that, the example which is based on if statement. In this example, we use two variables a and b which are used as part of if statement to test whether b is greater than a. As a 33 and b is 200. We know that 200 is greater than 33, and so we print screen that b is greater. Student, a is equal to 33 and b is equal to 200 means two variables जो a and b है उनको क्या वैल्यू असाइन की है 33 and 200. ना हम if स्टेटमेंट को देखेंगे हम इसे कैसे यूज करते हैं. if which is a keyword. आफ्टर दैट हमने कंडीशन यहाँ चेक करनी है b is greater than a, then colon.
कॉलन की जस्ट बाद आप जो भी स्टेटमेंट या लाइन लिखते हैं वो प्रिंट हो जाएगी. देन प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए. Now your output will be B is greater than A. Now student, don't forget it that you used white space between if and B is greater than A condition. Whenever white space is necessary, you used it in your Python. Second statement of if with else. Student, if with else is used to test the condition, and if the condition is true, it performs certain action, and alternate course of action if the condition is false. Student, main difference between first and second statement is that first statement works only whenever condition is true, and if with else हमेशा वर्क कब करता है जब कंडीशन ट्रू होती है, एंड कंडीशन के फॉल्स होने पर भी सर्टन एक्शन तो परफॉर्म करता ही है. नाउ द सिंटेक्स ऑफ if with else is if then condition colon after that statement you want to execute, else colon statements. Student, it's a syntax of if with else statement. स्टूडेंट, जैसे ही इफ कंडीशन ट्रू होती है कंडीशन ब्लॉक के जस्ट नीचे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा. व्हेन, कब होगा, जब कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स. नाउ इसे देखने के लिए, समझने के लिए हम यूज करते हैं एग्जांपल नंबर 2. राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज ऑफ पर्सन and print whether the person is eligible for voting or not. Using if with else statement हम ये प्रोग्राम देखते हैं. ना स्टूडेंट, यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया है age is equal to int, which is a data type of that age variable. After that input enter your age means ये enter your age जो हमने इनपुट लिया है वो यूज़र इनपुट करेगा. आफ्टर दैट हमने इफ स्टेटमेंट यूज किया है जिसमें हमने कंडीशन दी है एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 मीन्स वेरिएबल एज की वैल्यू जैसे यूजर इनपुट करेगा वो किससे ग्रेटर होनी चाहिए, 18 से. देन हमको क्या स्टेटमेंट प्रिंट होके दिखेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. अदरवाइज कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पास, व्हेन योर कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स. ओके. सो स्टूडेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज कब प्रिंट होगा, व्हेन योर इफ कंडीशन इज ट्रू. अदरवाइज else statement will be executed and sorry you are not eligible for voting message display on your computer screen. If with else works on both the situation when your condition is true as well as your condition is false. Now let's move on third statement, if with elif. If with elif is used where multiple chain of condition is to be checked. Each elif must be followed by condition and then statement for it. After every elif we can give else which will be executed if all the condition evaluated to false. स्टूडेंट, अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो तब हम यूज़ करते हैं इफ़ विथ एलिफ का. सारे स्टेटमेंट इफ़ कंडीशन पर बेस्ड होंगे, बट जैसे ही सारे इफ़ कंडीशन जो ट्रू थे वो अगर नहीं होते हैं तो एट लास्ट जो एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होके आपको क्या देगा, आंसर. ना सिंटेक्स इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट नंबर 1, जैसे इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन से पार्ट में जाते हैं, सेकेंड एलिफ में. देन एलिफ में हम सेकेंड कंडीशन लगाते हैं. स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट इट, मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल चेन ऑफ कंडीशन को यहाँ चेक किया जाता है. ओके. नाउ जैसे सेकेंड स्टेटमेंट होगा
आफ्टर दैट फिर हमने एक एलिफ लगाया, उसमें हम थर्ड कंडीशन लगा देंगे। ऐसे हम मल्टीपल कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 अप टू सो ऑन लगाते रहते हैं, हमें जितनी भी कंडीशन चेक करनी हो। जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो उसके जस्ट नीचे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा? लास्ट में जो एल्स है वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ओके, then it is an example of if with elif. Now let's see it. Write a program to input temperature of water and print its physical state. Here we are using variable temp. In this variable we enter the temperature of water. Input function will be used to enter the temperature of water, means जो temperature की value हो वो किस कौन देगा, which is given by user. Now in first if statement, check the first condition, temp is greater than 100. Student, when the condition is true, the first statement will be executed and guess state message will be printed on your computer screen. गाइस हम सेकंड कंडीशन एलिफ पार्ट में चेक करेंगे। इन एलिफ टेम्प इज लेस देन 0 student and the condition is true, then solid state message will be print on your computer screen, or we can say that second statement will be executed when the second condition is true. If both the condition false हो जाती है अगर, means temp is greater than 100 and temp is less than 0, then last में जो else statement है वो part क्या होगा, execute होगा. Then liquid statement message will be executed. We can say that whenever multiple condition is false, then at last only else part will be executed and message display on your computer screen. Okay, now let's move on fourth statement of if. Nested if statement is the last statement. Nested if. In this type of if, we put if within another if as a statement of it. Mostly used in a situation where we want different else for each condition. Okay student, nested if means एक if statement के अंदर एक और if statement को use करना. Okay, if we put if within another if. Now syntax of nested if condition number 1, after that this condition is true, then हम क्या यूज करेंगे, सेकेंड इफ स्टेटमेंट, और सेकेंड इफ में हम क्या यूज करेंगे, कंडीशन नंबर सेकेंड. नाउ कंडीशन सेकेंड जैसे एग्जीक्यूट होगी तो हम कंडीशन सेकेंड का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो सेकेंड कंडीशन का एल्स है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. आफ्टर दैट कंडीशन थर्ड अगर हमें चेक करनी हो तो उसके लिए हम इफ़ के कौन से पार्ट में जाएंगे, एलिफ पार्ट में. देन कंडीशन थर्ड को चेक करेंगे. कंडीशन थर्ड जैसे ही ट्रू हो जाती है तो उसके जस्ट नीचे वाला और बिलो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स पार्ट execute होगा and message will be displayed on your computer screen. So it's an syntax of nested if statement. So let's move on example number 4 of nested if statement. So let's see the example. Write a program to check enter year is leap year or not. Student, I am taking variable year and enter any year input. First, check the condition year मॉड्यूल डिवीजन 100 इज इक्वल टू 0, मीन्स जो भी आप ईयर एंटर करते हो उसका किसके साथ हम मॉड्यूल डिवीजन देखेंगे, 100 के साथ में. अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है देन चेक द सेकेंड कंडीशन. हम नेस्टेड इफ यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम एक इफ के अंदर सेकेंड इफ लेंगे एंड कंडीशन सेकेंड चेक करेंगे. ईयर मॉड्यूल डिवीजन 400, अगर 400 के इक्वल हो जाता है ईयर तो क्या आ जाएगा, ईयर इज लीप ईयर, मीन्स फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है, उसके बाद हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, सेकंड भी ट्रू हो जाती है तो सेकंड का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा. देन ईयर इज लीप ईयर मैसेज विल बी प्रिंट ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, और
will be executed, otherwise else will be executed. अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन एलिफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा. देन ईयर किससे कंपैरिजन करवाएंगे, 4 से. अगर वो दोनों इक्वल हो जाता है तो ईयर इज लीप ईयर मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज एल पास विल बी एग्जीक्यूटेड. एंड ईयर इज नॉट लीप ईयर मैसेज विल बी डिस्प्ले ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. सो स्टूडेंट, ये आपकी सभी इफ स्टेटमेंट के पार्ट्स थे. इन सभी प्रोग्राम को आप आपके पाइथन जो सॉफ्टवेयर है उस पर रन करके देखिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी देन मैसेज मी और टेक्स्ट मी. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.